Okay, so students, first of all, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ what is the nature and scope of political science ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, what is the meaning of nature and scope of political science, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Students, when we talk about scope of political science, it means if we study political science subject, how can we be benefited out of it, what all aspects we can come to know, and how we can utilize the political science subject in different fields of our society or maybe the different field of our politics. Also, how does this political science as a subject differs from other subjects? There are many subjects, there are certain science-based subjects, for example, chemistry, botany, zoology, mathematics, etc., etc. But there are also certain subjects which are purely humanities. For example, sociology, history, education, these are related to humanities. So there is a controversial related to the political science. Is it a genuine science or is it a humanity? Okay, because during the graduation we understand political science not under science stream but under the arts stream, under the humanities streams. So this we have to understand when we talk about nature and scope of political science. If we study this subject, what are the scopes of achievements, what are the scopes of understanding, what different we can do, and how different this subject is from the other subjects. So students, let's understand. If we talk about the scope of discipline, discipline means the subject itself. Political science is considered to be one of the oldest discipline. Okay, I mean, बहुत जानी चाहिए. I think during the time of Plato we have talked about like 500 BC. ସେଇ ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲେ, Socrates ଥିଲେ. So political science deal with governance. According to the Sabine କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? We can trace the origin of the political science when people started thinking how to organize collective life, isn't it? So when people started thinking how can one person organize their life, when the ability to think of particular people comes in our mind, then you say it is the origin of the political science. Because when we think to organize our society, when we think to organize ourselves, we alone is not possible. We means I is inclusive part of the we. So if I want to organize my own life, first of all I have to depend on the others. If the society is organized, then probably I will be organized, but not the vice versa. If I am organized, that doesn't mean the society will be organized. Okay, so things are relative with each other. Political science is a vibrant discipline, different frontiers we understand. Today it is not only limited to public sphere, it also includes the family, it includes the environmental political science called as the master science. This is the reason why Aristotle has said political science is the master science. It is the master science because it touches all aspects of human life. It touches all aspects of human life. Okay, its approach is comprehensive. It is a master science because master need to know various dimensions of human life. So this is the introductory part of the, you can say, nature of the political science. According to Garner, political science, it begins and ends with the state. Garner कौन कहिसंती? That is the reason ମୁଁ କହିଲି ना टिके पूर्वରୁ कि the theories of state काहे कि हमें पढ़िबा, because सेटा पढ़िया पूर्वରୁ टिके जदि हमको understanding अछि, how can we approach the subject? Remember, although as per your syllabus this topic is in the first thing, but आमे एटू start न करिगी, आमे कोड start कले, आमे last to start कले, because of the obvious reason already
तुमको एक्सप्लेन करि सारिछि. So according to Jekyll, state and government is the core area of political analysis. Whenever we talk about political analysis, primarily जिनसे हम कौन डिस्कस करूँ, स्टेट विषय डिस्कस करूँ, हमें डिस्कस करूँ पावर विषय डिस्कशन करूँ. ओके, political science as a discipline has passed through various stages. Ancient Greece रे political science was the part of the philosophy. पूर्वରୁ political philosophy थिला. एबे हमें जति एस पर द स्टडी मु तुमको कहलिबी, it was political economy or a political philosophy. Are you understanding? Okay, in medieval times political science was a part of the religious study. In modern times it took its own identity. पूर्वରୁ political science as a subject बोली नथिला. Ancient time जेतବେଳେ प्लेटो अरिस्टोटल को विषय में पढिथिले सेतବେଳେ हमें philosophy पढिथिले, political philosophy. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक हमें केबे हमें प्राइमरीली हमें कोन भाबिले मॉडर्न टाइम्स रे हमें जानिया को पाइले. सो स्टूडेंट्स, इन द मॉडर्न डिसिप्लिन्स इफ वी टॉक, इट्स ऑटोनोमस आइडेंटिटी. ओके, इट्स ऑटोनोमस आइडेंटिटी. व्हाट आर द अप्रोचेस? देखो एटू डायरेक्ट तमरो क्वेश्चंस आसे. तुमर जो तीनटा अप्रोच दिया जाईची एज पर योर सिलेबस, इफ यू सी एज पर योर सिलेबस तीनटा अप्रोच दिया जाइए. केवल से तीनटा अप्रोच को मन रख, दैट्स इट. अधिक जानिया दरकार नहीं. गोटे हूँ हिस्टोरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच. क्वेश्चंस डू कम डायरेक्टली. व्हाट आर द हिस्टोरिकल अप्रोच, व्हाट आर द नॉर्मेटिव अप्रोच एंड व्हाट आर द एम्पिरिकल अप्रोच. ओके, सो ताकू टिके ट्राई करो ये तीनटा अप्रोच को बुझिबा पई, देन थिंग्स विल बी मच मोर इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जदि हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखिबा भाई केमिति ये जो पॉलिटिकल साइंस को, व्हाट डू यू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच एंड मेथड्स? अप्रोचेस एंड मेथड्स रो अर्थ कोन? अप्रोचेस एंड मेथड्स रो अर्थ एया है जे हमें कोनोस भी गोटे सब्जेक्ट ए बिषय हमें पॉलिटिकल साइंस पढुछ बोली हमें जानि छे. फॉर एग्जांपल गोटे स्कूल लेवल रो छुआ ताको हम जदि पॉलिटिकल साइंस बोली बुझिया पे ट्राई करिबा, सी जदि प्रथम थर पई फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट इमेजिन तुमे जेतले प्रिपरेशन स्टार्ट करिनो, इफ यू डोंट बिलोंग टू पॉलिटिकल साइंस, if you belong to non political science background, academic तमरो सेठी पाठ पढिछो, फर्स्ट टाइम पई जेतले तमे गोटे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करो, सेतबेले तमे एते टेक्निकल जिंस जानि परिबोनी. ओके, तो तमे कोन फाइंड आउट करो? यू विल ऑलवेज फाइंड आउट अ शॉर्टकट मेथड. हाउ कैन आई अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? मु केमिति जल्दी जल्दी जिंस गुडा को बुझी परिबी, तो तमे किछटा टेक्निक डेवलप करिया पे ट्राई करो. दैट इज कॉल्ड एज approach to understand political science or method to understand the political science. But एठी जो approach and methods विषय कहा जाउची, primarily we talk about the philosophical approach which is otherwise known as normative approach, जोटा syllabus रे अछि तमरो. Next one is the historical approach and empirical approach. Okay, as per your syllabus कोन कोन अछि मु कहिली, गोटे होची तमरो historical approach, normative approach and empirical approach. ए तीनटा ही तुम मानकर अछि. मु एठी तुमनकर गोटे एक्स्ट्रा देइछि. व्हाट इज एन एक्स्ट्रा? जेहेतु जो माने यूपीएससी पे प्रिपेयर करू छो, प्रोबेबली इट विल बी मच मोर इंपोर्टेंट. दैट वन इज लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. बट एज पर योर सिलेबस ओनली this one and this one is sufficient. Philosophical approach, normative approach and historical approach, both philosophy and normative are same, केवल नाटा अलगा अछि. Historical approach and empirical approach will be sufficient. ए तीनटा भलो भाबरे जानो. Legal institutional approach टा तुम्हारो OPSC परीक्षा पई necessary नहो, UPSC पई definitely this is important, जोडो में परे मे भी पढाई दी पारिबे, those who are targeting for UPSC exams. All right, so first of all let us understand first one, that is philosophical approach. What is philosophical approach? It is one of the oldest approach. आमे कोन जानथिले टिके पूर्व में कोन डिस्कशन करली जे हमरो साधारणतः प्लेटो को समय रे किबा तांको पूर्व सोक्रेटिस को समय रे there was nothing called as political science. It was political philosophy, or simply you can tell as darsana jota ame kahu. Okay, it is called as philosophy. There was nothing called as political science. So the philosophy jetwala ame kahu, okay, and philosophy means it is one of the oldest school. It is oldest approach of political analysis. Plato is known as the father of philosophy. Aristotle को कहा जाए father of political science, but Plato को कौन कहा जाए father of political philosophy. And by theory of ideas, समझ जानी थी वो तंकर जो theory of ideas थिला, Plato has shown that it is not enough to know what we observe,
it is more important to go beyond the matter and understand the essence of ideas. मने अछि से गोटे कॉन्सेप्ट कोन कहिथिले कि गोटे गुफा भितरे ओके गोटे गुफा भितरे जणे जदि व्यक्ति अछंती एवं से बाहर पटु जो आलोक पडुची within a cave when sunlight falls ए wall रे गुफार wall रे सी एपटे मुह करी बसिची सी एक्चुअली देखा जाउची अलगा किछि डेफिनेटली बाहर किछि अलगा घटुथिबा बट तार छाया जोटा पडुची ताको फील होउची जे दिस इज रियल बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट रियल तो सी कोन कहिथिले ओके प्लेटो अरिस्टोटल एमाने सब बेले कोन कहिसंती नॉलेज ट्रू नॉलेज इज वर्च्यू गोटे कांसेप्ट अछि ट्रू नॉलेज आमे केमिति पाइबा व्हेन वी लुक एट आवरसेल्फ आमे जेतळे निज भितरे आमे पचारिया पे चेष्टा करिबा निज भितरे आमे बुझिबा पे चेष्टा करिबा देन ओनली द ट्रू नॉलेज विल कम okay then only the true knowledge will come so students okay केमिति when we talk to our soul हमर अंतरात्मा को जेतळे हमें पचारिबा हमर विवेक को जेतळे हमें पचारिबा then only we will get the true knowledge right so philosophical approach एटा को कहा जाय what are the features कोन it goes beyond the study of ideas केवल आइडिया को स्टडी करिबा न या आइडिया रो बियॉन्ड रे जाई कि तारो एक्चुअल एसेंस को बुझिबा होची philosophical approach another one is philosophical approach is normative philosophical approach is concerned with what ought to be rather than what is okay तुमरो देखो एरिस्टोटल प्लेटो को समय रे कोन थिले सोक्रेटिस काहे के हेमलॉक पीले पॉइजन काहे के पीथिले सोक्रेटिस को समय रे सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और सोक्रेटिस स्कूल ऑफ थॉट सोफिस्ट माने कोन बुझौतले कि पैसा ही सब किछि मु जोटा कहूँ सेटा ठीक बट सोक्रेटिस कहले कि ना पैसा सब किछि न वेल्थ इज नॉट एवरीथिंग नॉलेज इज एवरीथिंग जो व्यक्ति पाखरे प्रकृत नॉलेज अछि प्रकृत नॉलेज काहू कहिबा पैसाटा प्रकृत नॉलेज न सो सोक्रेटिस ऑलवेज टॉट टू हिज स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग प्लेटो that you should not do what it is you should do what ought to be जोटा हमरो इंडियन फिलोसफी रे धर्म बोली कहू कर्तव्य निष्ठा बोली हमें कहू धर्म बोली कहू राजधर्म छत्र धर्म ए धर्म कांसेप्ट इज लिंक्ड विथ what ought to be or what you ought to do rather than what should do so philosophical approach is always forward looking जेमती हमरो फॉर एग्जांपल लियो टॉल्स्टॉय कहिसंती there is no difference between philosophy and political theory से ए पर्टिकुलर जिंसटा कहिसंती there is no difference between philosophy and political theory next political theory has to be philosophical in nature otherwise हबनी जेमते जॉन रॉल्स कोन कहिले he has also suggested the importance of philosophy से कोन सजेशन दैचंती importance of philosophy according to him philosophy originates towards the life it tells us that our life can be much better than what it is it tells what the scope of possibilities of human beings all these are fine but what are the drawbacks problem कोन कि philosophical approach get too much diverse from reality problem होची सबडो बडो problem होची ये कोन से जिंस को जदि हम philosophical point of view देखिबा reality टू बहुत दूर रे पळाई जाय so of course philosophy is important but जो critics माने अछंती से critics माने कोन कहउछथि there needs to be a balance between philosophy as well as reality हम लाइफ रे भी दरकार न के हम जदि टू प्रैक्टिकल हे जिबा then also very difficult हम त मनुष्य बंची परिबानी हम जदि टू मच philosophical हे जिबा then also हम reality रे बंची परिबानी तो हमको गोटे बैलेंस अप्रोच रखिया पड़िबो there are times where we need practicality also times where we need bit of philosophical so this is related to philosophical methods or empirical methods okay is it clear to all of you जानि गेलो समझते किछि प्रश्न अछि पचार दियो if you have any question please ask okay students next approach is known as historical approach next कोन historical approach कोन सेटा देखिबा historical approach implies understanding politics with the help of history historical approach काहा कहबा understanding politics with the help of history Machiavelli has been an exponent of historical approach ताकर कहबार अर्थ है what is historical approach means
we have to understand the political journey through the events of history. ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ରେଡ୍ ଇଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପଲିଟିशियନ୍, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁ କି ନାହିଁ? ପଢୁ। କାହିଁକି ପଢୁ? ଗାନ୍ଧୀ ତ କେବେ କହିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଲିଟିशिଆନ୍ ବୋଲି। ଓକେ, ଗାନ୍ଧୀ କେବେ କ୍ଲେମ୍ ହିଁ କରିନଥିଲେ, ବଟ୍ କାହିଁକି ପଢୁ ଏଣ୍ଡ କେମିତି ପଢୁ? ଗାନ୍ଧୀ as a state person or politician we can only know through events of history. ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ କଣ କଣ କଲେ, କଣ କଣ ଇଭେଣ୍ଟ ସେ କଲେ, ଆଉ ପଲିଟିକାଲି କଣ କଣ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସିଏ କେବେ ବି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କହିନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଲିଟିକାଲି ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ନା, ବଟ୍ ପଲିଟିକାଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା कि स्पार्टा और एथेंस ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲା, एथेंस lost the war despite the fact they have a big army against Sparta, few hundreds of soldiers. So ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, for then probably Rome was one of the pioneer in the political science ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମାନେ political critics କିମ୍ବା analysis ପାଇଁ Rome as a concept ଯଦି ତମେ world history ପଢିଛ probably ବହୁତ interesting ଲାଗିବ ତୁମକୁ। Okay, so my point is जे पॉलिटिकल साइंस को बुझिबा पई गोटे तो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हम बुझिले, आ गोटे पॉइंट सबटु बेस्ट होउची एविडेंस बेस्ड हिस्टोरिकल अप्रोच। आमे जेमति फॉर एग्जांपल भारत आमे कोन कहू वी आर मोर स्पिरिचुअल, काहे कहू आमे वेस्टर्न कंट्रीज माने काहे कहू नांती? देयर हैज टू बी सम लॉजिक। लॉजिक कोन? लॉजिक बहुत सिंपल, जे हिस्ट्री रे विभिन्न प्रकार इवेंट महाभारत रामायण एटसेट्रा सब घटी सारीची, सेठू हमें जो एविडेंस हमें कलेक्ट कर ले, देन वी आर टेलिंग दैट दिस इज द पॉलिटिकल जर्नी ऑफ इंडिया। बुझी परछो? हिस्टोरिकल अप्रोच होची हमें ताको कहिबा। अकॉर्डिंग टू लास्की, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। लास्की डेफिनेटली कोन गोटे इंपोर्टेंट जिंस कहिथिले कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। जेते जण थिंकर जहां भी किसी कहिसंती, दे हैव टोल्ड बेस्ड ऑन देयर स्पेस एंड सर्कमस्टेंसेस. So there are many scholars who find very close through relationship between history and politics. It is often said that politics is present history and history is past politics. जिनसे कहा जाए कौन? Okay, politics is present history and history is past politics. Politics एबे जहाँ होची is a present history and history is past politics. Okay, history is root, politics is fruit. ये सब जिनस गुड़ा अच्छी, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? हिस्टोरिकल अप्रोच रे प्रॉब्लम कोन? स्कॉलर्स हैव हाइलाइटेड वेरियस लिमिटेशंस ऑफ द हिस्टोरिकल अप्रोच. हिस्ट्री इज टू फास्ट एंड चैलेंजिंग टास्क टू फाइंड दोस फैक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस. देखो हिस्ट्री रे जेतले हम गोटे इवेंट सपोज हमें 1857 रिवोल्ट हमें पढ़िबा, 1857 रिवोल्ट रे इकोनॉमिक कॉस्ट थाई पारे, पॉलिटिकल कॉस्ट थाई पारे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थाई पारे, साइंटिफिक किसी कॉस्ट थाई पारे, रिलीजियस किसी कॉस्ट थाई पारे, कास्ट बेस्ड किसी कॉस्ट थाई पारे. तो विभिन्न प्रकार कॉस्ट को इन्वॉल्व है कि गोटे इवेंट तयारी हुए, एमति न जे गोटे कारण केवल पॉलिटिकल कॉस्ट पे ही. सो हिस्टोरिकल अप्रोच रो सबुठ बड़ लिमिटेशन, फिलोसॉफिकल अप्रोच रो लिमिटेशन कोन? इट इज टू फार फ्रॉम द रियलिटी. बट हिस्टोरिकल अप्रोच रो सबुठ बड़ लिमिटेशन होची हिस्ट्री इज टू वास्ट. इत्ते हजार हजार वर्ष रो इतिहास तारा केबे हेतिला, कोन हेतिला, काहे की हेतिला, इत्ते इवेंट को आइडेंटिफाई करिबा, ताको एनालिसिस करिबा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब एनालिसिस से भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एनालिसिस करिबा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक रिलेटेड टू हिस्टोरिकल अप्रोच. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आ गोटे होची एम्पिरिकल अप्रोच. थर्ड तमरो जो पॉइंट होची एम्पिरिकल अप्रोच. व्हाट इज एम्पिरिकल अप्रोच? एम्पिरिकल अप्रोच सजेस्ट लुकिंग एट द थिंग्स एज दे आर. एम्पिरिकल अप्रोच रो अर्थ होची एविडेंस बेस्ड. एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड रो अर्थ आमे कोन भाबो? फॉर एग्जांपल गोटे इंसिडेंट हेई गला, जणे भाबिबो कि हां एथि पई हेई थाई पारे, आउ जणे कहिबो जे नाही एटा हेईची, वर्तमान कोन करिबा? मु काढे बुझी परछो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज गोटे भाबो फॉर एग्जांपल जेनजी नेपाल रे जेनजी प्रोटेस्ट ले से गवर्नमेंट को चेंज कर दले.
ठीक अच्छे तो एम्फेरिकल अप्रोच कौन देखिबो डिफरेंट कहूँ तुमको एम्फेरिकल अप्रोच कौन देखिबो एम्फेरिकल अप्रोच देखिबो जे जेनजी प्रोटेस्ट हैला करप्शन पाई समय पिला लढुथिले दे वर फ्रस्ट्रेटेड आ सेति पाई समाने तांको भितर किछि लोक मरि गले देन समाने कोन कले समाने ताको रिवोल्ट करबा स्टार्ट कले गवर्नमेंट चेंज कले व्हाट कैन बी डन नुआ गवर्नमेंट रिइंस्टेट हबो जे कि रिफॉर्म आनी परिबो सिंपल दैट इज कॉल्ड एज एम्फेरिकल अप्रोच फिलोसॉफिकल अप्रोच कोन करिवो सी एया भाबिबे कि ओके मे बी अमेरिका रो हाथ थाई पारे तो आम जब अमेरिका को बुझेदबा प्रोबेबली एटा ठीक हम मे बी भारत इंडिया भी हाथ थाई पारे मे बी किसी लोग कहले जे नहीं मोनार्की मे बी रिटर्न हो पारे दिस आर कॉल्ड एज फिलोसॉफिकल अप्रोच एटा हेई थाई पारे बट मे बी हेई थाई पारे सिम्पली किसी देयर इज नो स्टैंडर्ड थिंग बट एम्फेरिकल अप्रोच कौन देखिबो लुकिंग एट द थिंग्स एज दे आर इंस्टेड ऑफ व्हाट ऑट टू बी कौन हेई थाई पारे ताकू न भाबी कि जोटा जो भली अछि सेही पर्टिकुलर जिंसो को देखिबा होचे एम्फेरिकल अप्रोच ओके सो जॉन लॉक हैज प्रोवाइडेड फिलोसॉफी ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ एम्फेरिकल अप्रोच सी अकॉर्डिंग टू हिम माइंड इज ए क्लीन स्टेट सी कौन कहले टेबुला रोजा अर्थ होची क्लीन स्टेट माइंड टा होची गोटे क्लीन स्टेट हिज पोजीशन इज डिफरेंट फ्रॉम सोक्रेटिस फॉर सोक्रेटिस नॉलेज इज इनहेरेंट इन आवर सोल we need dialects to know and to get the true knowledge according to Locke there is nothing imprinted in our soul okay arisho amaro Socrates कोन कहितले कि हमर ऑलरेडी आत्मा भितरे कि अंतरात्मा भितरे विवेक भितरे ठीक मनीष गोटे खंडे लुचि के अछि जदि हमें अधिक क्वेश्चन आंसर करिबा डिस्कशन करिबा डायलॉग डायलेक्टिक्स करिबा देन ओनली जिंसटा रिवील होबो भलो होबो बट जॉन लॉक बिल्कुल सपोर्ट करंतनी जॉन लॉक कहंतनी नाही जो idea knowledge these are all acquired with course of time I mean he is also see everybody is right in their own dimension Socrates तांको कथारे भी ठीक अछंती Locke भी आंको कथारे ठीक अछंती now comparison between empirical and philosophical approach मु ऑलरेडी तुमको कहिली डिटेल्स मु डिस्कशन करि सारिची ओके स्टूडेंट्स एंड जदि हमें देखिबा empirical approach और scientific approach भितरे भी मु कहली एम्फेरिकल अप्रोच लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच जे कहूँ कि हाउ साइंटिफिक अप्रोच इज डिफरेंट देन एम्फेरिकल अप्रोच इज एविडेंस बेस्ड जोटा मु कहली साइंटिफिक अप्रोच एम्फेरिकल अप्रोच परे थियरी हैला बेस्ड ऑन द एम्फेरिकल अप्रोच विशेष किसी डिफरेंस नाही ओके सो दिस इज ऑल अबाउट लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जोटा मु कहली लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मु खाली गोटे ब्रीफ कहि दोची फॉर योर सेक ऑफ सैटिस्फैक्शन जेहेतु even if it is not your syllabus but तुम्हारा सब्जेक्ट रे अछि जिंसटा so for your sake of satisfaction what is legal institutional approach रो कहयर अर्थ कि जहा सब लीगल इंस्टीट्यूशंस अछि कोन लीगल इंस्टीट्यूशन अछि जे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सो एबे अमेरिका को बुझिबा पई कोन करिया पड़िबो one of the method is legal institutional approach अमेरिका रो पॉलिटिक्स बुझिबा पई अमेरिका रो जो कांग्रेस किमा पार्लियामेंट अछि ताको हमें डे वन रो बुझिया पड़े जे सेठी कोन कोन केमिति सब सिस्टम हेची केमिति कोन सेठी बिल पास हेची कोन सब बिल पास करिसंती केमिति सेटा कन्वर्ट हैला दैट वी अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स जेमति फॉर एग्जांपल आमे कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से बुझू कि नै रेगुलेटिंग एक्ट रो आरंभ करिके तुमे कहि परिबो कि 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यस और नो हो कि नै को लीगल इंस्टीट्यूशन कौन हम कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 रहिला सेटारे पुनी नेक्स्ट काहे कि पीसीआर एक्ट हैला नेक्स्ट कोन पाई हैला काहे कि हैला सो व्हेन यू ट्राई टू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग तमे देखिबो जे विभिन्न जिंस चेंज हेई देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फर्दर गुडाई चेंजेस हैला देन फाइनली 1947 सो व्हेन यू स्टडी दोस एक्ट्स देन ओनली यू गेट टू नो द पॉलिटिकल जर्नी ऑफ अ स्टेट आई होप completely this is clear related to legal institutional approach so students these are the things related to approaches and study and nature and scope of the political science जोटा मु आज तुम मानकर सिलेबस हिसाब रे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर एक्स्ट्रा किसी जिंसोटा कहिची जेमते लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन योर सिलेबस सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन आउ नेक्स्ट मु जबे भी क्लास देबी
गोटे सब बड़ जो पार्ट अच्छे जोटा थ्योरीज ऑफ स्टेट पर्टिकुलर लिबरल मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनी ऑलरेडी हमें पढ़ीचे वर्तमान तुम मैंने बुझिया पे बहुत इजी हिजिवो और स्टेट सुवरेनिटी याकू हमें कौन करबा याकू हमें ट्राई करबा पढ़िबा पई क्लियर ऑल ऑफ यू ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे आज पई एति की नेक्स्ट क्लास जब भी हबो मो आउ दु तीन टॉपिक ट्राई करिवि जिनसो गुडा को कैरी फॉरवर्ड करिया थैंक यू सो मच